So next chapter is biomolecule. So actually, what is the meaning of biomolecule? Now, the bio means living and molecules means the molecule which is present in the living cell is called as biomolecule, right? तो हम दिखाते हैं क्या क्या living cell के अंदर present है एंड लिविंग सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसको आपको एनालाइज करने के लिए लिविंग सेल को ब्रेक करना पड़ेगा एंड ब्रेक करने के लिए आपको सॉफ्ट करना पड़ेगा उसका सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन राइट. इसीलिए सपोज टू बी आई एम टेकिंग एनिमल सेल हम ले रहे हैं या तो कोई भी आप प्लांट सेल ले सकते हैं. सपोज टू बी आई एम टेकिंग व्हाट ना अ पीस ऑफ लिवर और अ पीस ऑफ लीफ एंड वी आर एडिंग व्हाट ना ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड जैसे ही ऐड करेंगे इसका जो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी है वो सॉफ्ट हो जाएगा. नाउ वी विल ग्राइंड इट बाय मींस ऑफ व्हाट द मोर्टार एंड पेस्टल. ग्राइंड कर देंगे. ग्राइंड करने के बाद आपको जो एक थिक लिक्विड मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज थिक स्लरी राइट. उस थिक स्लरी को हम अभी क्या करेंगे ना फिल्टर करेंगे. वी विल फिल्टर इट. We'll get two fraction of this. We'll get two fraction. One is filtrate, another is retentate. Filtrate and retentate. फिल्ट्रेट जो है लार्ज मॉलिक्यूल होगा कि स्मॉल मॉलिक्यूल होगा. जो फिल्टर हो गया एंड हम फिल्टर किसके थ्रू कर रहे हैं ना बाय मींस ऑफ चीज क्लॉथ और कॉटन क्लॉथ. बाय मींस ऑफ चीज और कॉटन क्लॉथ के थ्रू हम इसको फिल्टर किए. विल गेट टू फ्रैक्शन फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट. अब फिल्ट्रेट देखें क्योंकि ये स्मॉल मॉलिक्यूल इसी में तो फिल्टर हो गया. इसको बायो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे कि माइक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे. माइक्रोमोलिक्यूल. इट इज एक्चुअली एसिड सॉल्युबल की एसिड इनसॉल्युबल. एसिड सॉल्युबल. फिल्ट्रेट इज एसिड सॉल्युबल. बायो माइक्रोमोलिक्यूल एंड उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा दैट इज 18 to 800 डेल्टॉन. इसका मॉलिक्यूलर वेट. अब बताइए एग्जांपल क्या क्या हो सकता है फिल्ट्रेट के अंदर. क्या होगा सिंपल होगा. तो सिंपल क्या क्या हो सकता है. सिंपल शुगर. सिंपल शुगर में कौन कौन आएगा मोनोसैकेराइड ऑलिगोसैकेराइड because polysaccharide comes under biomacromolecule. Next न्यूक्लियोटाइड होगा कि न्यूक्लिक एसिड होगा. न्यूक्लियोटाइड. प्रोटीन होगा कि अमीनो एसिड्स होगा. प्लस डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आल्सो कम्स अंडर दिस. ये सारे के सारे फिल्ट्रेट में आ जाते हैं which are acid soluble comes under the biomicromolecule as the molecular weight is 18 to 800 dalton. अब सेकंड है retentate. Retentate it is acid insoluble.
It is biomacromolecule. And it is above 10,000 Dalton. Its molecular weight is more than 10,000 Dalton. बताइए एग्जाम्पल क्या होगा? जो भी हम लोग फिल्ट्रेट में लिखे उसका मोनोमर सॉरी पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा. तो जैसे कि यहाँ पे सिंपल शुगर लिखा है तो यहाँ पे हो जाएगा पॉलीसेकेराइड. वहां पे न्यूक्लियोटाइड है तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लिक एसिड. दिस इज प्रोटीन. बट एक चीज मैंने यहाँ पे लिखा नहीं दोनों में, वो है लिपिड. लिपिड एक्चुअली किस में आता है? कम्स अंडर द रिटेंटेट. इसीलिए लिपिड को भी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल दिए. बट द फैक्ट इज दैट लिपिड का जो मास है, जो उसका वेट है, दैट इज बिलो 800 डाल्टन. इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है लिपिड का बिलो 800 डाल्टन है. तो उसका दो कैरेक्टर आ गया. इट इज कम्स अंडर द एसिड insoluble फ्रैक्शन रिटेंटेट, but the molecular weight is similar to that of what? Biomicromolecule. That is why the lipid is not strictly macromolecule. Lipid is not strictly macromolecule. This is the cause. Because उसका molecular weight जो है वो 800 डाल्टन के नीचे आता है. ठीक है. Now कोई भी लिविंग टिश्यू आप उसको बर्न कर देते हैं. अल्टीमेटली व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो इवापोरेट कर जाएगा कि नहीं? जो बचेगा जो इनऑर्गेनिक है उसमें क्या बचेगा ना? एस इज कॉल्ड एज बट ना विथ इनऑर्गेनिक और एलिमेंट पार्ट विच इज प्रेजेंट द रिमेनिंग फॉर्म. अभी क्वेश्चंस पूछेगा आपको कि विच एलिमेंट द मोस्ट अबाउंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. Oxygen. 65% of your body is formed of which element? The oxygen. दिमाग में चलता है कार्बन. एनसीईआरटी का चीज एक टेबल दिया हुआ है. तो हम लोग अभी एस एनालिसिस करते हैं. इसमें इनऑर्गेनिक एलिमेंट आ जाएगा. एलिमेंट is present in the earth crust and present in the human body. Oxygen is in the earth crust is 46.6%. In the human being it is 65%. Most amount. Carbon 0.03% in the earth crust, 18.5% in the human body. Hydrogen 0.14% in the earth crust, 0.5% in the human body. Nitrogen very little. And in the human body, the percentage is 3.3%. Calcium 3.6%. It is 1.5%.
sulfur 0.03% and 0.3% in the given body. Sodium 2.8%, 0.2%. Magnesium 2.1% and 0.1%. The last silicon 27.7%, and in human body it is negligible. Human body के लिए सिलिकॉन एक टाइप का पॉइजन. यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कैल्शियम. यहाँ से क्वेश्चन रहता है बच्चों, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल. आपके सेल का कंपोजिशन क्या है बताइए? वाटर 70 to 90% इज वाटर. उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? प्रोटीन. 10 to 15% of the cell is made up of what? Protein. Next, न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का परसेंटेज है 5 to 7%. थर्ड हाईएस्ट. कार्बोहाइड्रेट होता है 3%. लिपिड इज 2%. एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट और आयंस that is only 1%. आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा सीरियली. ठीक है, ये देगा कार्बोहाइड्रेट ए, वाटर बी, प्रोटीन सी, न्यूक्लिक एसिड डी and lipid E, which is the correct with respect to the composition of cell in the decreasing order or increasing order. समझे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो आपके बॉडी में अगर हम देखें तो कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायन में सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा आपके बॉडी में पोटेशियम है कि सोडियम है और कैल्शियम है? ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूं कि आप लोग के 99% बच्चे ये दो क्वेश्चन गलत कर. सबसे ज्यादा क्या है? पोटैश. उससे क्या है? कम थोड़ा सा. उससे कम क्या है? यहां से क्वेश्चन पूछेगा. Now we are coming to the next topic, primary metabolite. Primary metabolite क्या होगा? They have a direct role in the growth and development or doesn't have any direct role in the growth and development of the plant? Direct role. Need for basic primary processes. So, role in growth and development.
of body, like photosynthesis, respiration, protein synthesis, and lipid synthesis. ऐसे बॉडी में बहुत सारा एक्टिविटीज है जिसमें डायरेक्टली मेटाबोलाइट का रोल है, then that metabolites are called as what? The primary. Metabolites क्या है actually? That is the chemicals which has the role in the metabolism. ठीक है, अगर ये डायरेक्टली रोल है then it is called as what? The primary. बताइए एग्जांपल क्या होगा प्राइमरी का, बताइए। बताइए ना। अरे प्रोटीन सिंथेसिस में रोल है किसका? अमाइनो एसिड का। फोटोसिंथेसिस में रोल है तो क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल है तो सिंपल शुगर हो जाएगा। हेम in the role of what na? Respiration and circulation. These are all comes under what na? Primary metabolite, जो कि बॉडी के डायरेक्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एकदम डायरेक्ट रोल है। These are called as what na? Primary. अभी हम लोग आते हैं सेकेंडरी, और क्वेश्चन आपको आता है सिर्फ एग्जांपल्स, which is primary and which is secondary. तो आपको बस इतना दिमाग लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल कि whether it is a role in the metabolism or it is something different role in apart from the metabolism. Supposed to be कोई केमिकल आपके बॉडी में डिफेंसिव रोल है, समझ में आ रहा है कि डिफेंसिव रोल है, तो डिफेंसिव क्या प्राइमरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है? देखिए यहां से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, not involved in primary metabolic processes, so do not have direct role in growth and development of body, but have a role in defense. And generally it is secreted by or produced by, ये है क्वेश्चन जहां से मिलेगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन में आपको दे रखा होगा कि बैक्टीरिया, प्लांट, फंगी, ह्यूमन बीइंग, which is the odd with respect to secondary metabolite? ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग बॉडी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट सीक्रेट नहीं होता है, तो जो भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हम लोग यूज करते हैं एक्चुअली इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द फंगी, प्लांट एंड माइक्रोब्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल, फर्स्ट आते हैं पिगमेंट।
पिगमेंट्स में 2 एग्जांपल हम दे रहे हैं, कैरोटिनॉइड्स, एंथोसियानिन। फटाफट लिखिए। ये येलो टू रेड पिगमेंट है। जैसे आप लोग जानते हैं कि कैरोटिनॉइड्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द कैरोट। कैरोट का कलर क्या है ना, येलोइश टू रेड कलर है कि नहीं, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट प्रेजेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, द कैरोटीन। तो कैरोटीन किसके अंडर आएगा, कैरोटिनॉइड्स। एंथोसियानिन रेड टू वायलेट पिगमेंट, that is also present in the plant. Number 2, alkaloids. Alkaloids are एग्जाम्पल दे सकते हैं, मॉर्फिन। मॉर्फिन आप लोग 12th में पढ़े हो ना, क्या पढ़े हो मॉर्फिन का? पेन किलर को साइंटिफिकली क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। क्लियरली एनसीईआरटी में लिखा है कि मॉर्फिन इज अ स्ट्रॉन्ग पेन किलर और एनाल्जेसिक व्हिच इज बीइंग यूज्ड इन द पेशेंट हु अंडरगोन सर्जरी। लिखा है। हाँ, एंड ये कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होता है? कॉफी प्लांट, पोस्तो, पेपेवर सोमनिफेरम। हाँ, पोस्तो खाओ, आराम से सो जाओ, पेन भूल जाओ। इसीलिए बंगाल में हर घर में पेन भुनाने का सबसे इजीएस्ट उपाय। नंबर 3, टॉर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स, मोनोटॉर्पिन्स, डाइटॉर्पिन्स। नंबर 4, एसेंशियल ऑयल। एसेंशियल ऑयल के अंदर कौन आ जाएगा? लेमन ग्रास ऑयल। नेक्स्ट नंबर 5, टॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एब्रीन, रिसी, और क्या दे सकते हैं? cyanotoxin secreted by cyanobacteria which is mostly used as a herbicide and insecticide. Next number 6, lectin। आप लिख सकते हैं cyanotoxin के ब्रैकेट में, that is extracted from cyanobacteria and used as insecticide and herbicide. नंबर 6, lectin। इसका एग्जांपल हम देंगे कॉनकैनाबिलिन ए। नंबर 7, ड्रग्स। 12th का टॉपिक है विनब्लास्टिन। पढ़े हो? विनब्लास्टिन का फंक्शन क्या है? बताइए। विनब्लास्टिन आप लोग कैंसर ट्रीटमेंट में पढ़े थे, केमोथेरेपी ड्रग्स पढ़े थे ना, विनब्लास्टिन एंड विंसिस्ट्रीन। and it is extracted from the plant Catharanthus rugius and Vinca rugius। पढ़े हो? एंड दूसरी चीज हम लोग डेली खाते हैं, क्यूरक्यूमिन खाते हैं हल्दी में। दूध हल्दी खाने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि दूध में हल्दी मिलाने से वो बन जाता है मेडिसिन। As the curcumin is present in the turmeric which is act as an antioxidant, so antioxidant present in the turmeric is called as curcumin. And number 8, polymeric substance।
पॉलीमेरिक सब्सटेंस में कौन आएगा? रबर, गम, और क्या आएगा? सेल्यूलोज। ये क्वेश्चन पूछता है। सेल्यूलोज इज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट की सेकेंडरी मेटाबोलाइट? दिमाग में चलता क्या है कि सेल्यूलोज इज पार्ट ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल तो प्लांट में है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन इंपॉर्टेंट फंक्शन है बट नॉट हैव द डायरेक्ट रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसीलिए सेलुलोज को हम लोग सेकेंडरी बोलते हैं। क्वेश्चंस कैसे आएगा वो भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट आल्सो एक्ट एज ए ड्रग, also act as a polymeric substance, also act as a terpenoids, also act as a alkaloid। समझ में आ गया? ऑप्शन दे रखा होगा, बहुत ही इजी है। मोस्टली क्वेश्चंस आता है आपको टॉक्सिन से आता है, ड्रग से आता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंस से आता है एंड अल्कलॉइड से आता है, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।